So last week, I think we discussed all the components of the section A. Okay, including the Indian political thought. Okay, fine. So just now focus on section B. Okay. And then I'm going to start with the very first chapter, Introduction to Political Science. Okay. For sake of convenience, let me repeat few things. You must have already gone through the syllabus. We are still discussing the syllabus slightly in detail. Number one. Number two, you must have also gone through the previous year question papers, at least started the process. If not, please do that, at least from 2000 to 2022. So paper one, paper two, just go through each year's question paper at least once. Okay. Number two. Number three, you are supposed to start with NCERT. That is a political theory. Political theory NCERT. Read it twice, thrice. Still you have time. So at least this week. Okay. Number three, O.P. Gauba. O.P. Gauba's Introduction to Political Theory is going to be the reference for all of us. And then importantly, maybe next week you will get the very first set, political ideology. So NCERT, number two, O.P. Gauba's Introduction to Political Theory, and then subsequently the class mode. Okay. But go through NCERT twice, thrice, as many times as possible for you, because that would help you a lot in better understanding whatever is going on right now, at least in the initial lectures. And then you will be going through Gauba as well as the class. Okay. Let us start with the discussion of the section B, paper one, section B, Indian government and politics. Now there are four broad, one can say, sections as far as this section is concerned. We can reframe this syllabus in the form of four sections. So section A, now A, we are using that for sake of convenience. Okay. Modern Indian history. Now, modern Indian history, why should we study modern Indian history as part of Indian government and politics? We are supposed to study that. So, but when we say modern Indian history, it doesn't literally mean modern Indian history, but something which is part of modern Indian history. And there are two topics in our syllabus of section B, that is IGP, which is part of the paper one. And which are those topics? So you can see the titles. Indian nationalism. Okay. And the second one is the making of Indian Constitution. Now section B pertains Indian state, modern Indian state, no doubt about that. But modern Indian state as a process, generally it is understood, begins with colonialism. The process begins with colonialism. Decline of Mughal Empire, entry of European powers in the Indian subcontinent, and the British. Obviously, it was the British East India Company, English East India Company, which relegated all other European powers, companies to background and emerged as the victorious one, say, for example, and then establishment of their rule on India. To 1857 revolt, and then the direct rule of the monarchy. Okay, the queen, the king, the monarchy. From 1858 to 1947, that is till we gain independence. So this is known as the colonial period, and without understanding colonialism, colonial period, it is very difficult to make appropriate sense of rise of India as a modern nation state. Okay, so that is one thing. Therefore, the very first topic in section B happens to be Indian nationalism. Now, can we understand, comprehend India as a modern state without understanding or making sense of
nationalism? No, it is very difficult. Because in modern age, human societies are organized in a form which is known as fundamental political unit of organization, and that form happens to be nation state. What is the name of that form? Nation states. Now, in ancient Greek era, the unit of political organization was city states. It was city states. Okay. But as far as the modern societies are concerned, the form in which we are organized, let us say, we have organized ourselves, that form is known as nation state. So state to pata hai hame. So what is state? State is a supreme political institution, association, organization in a given territory. Okay, with four essential components: territory, geography; number two, people; number three, government; and number four, sovereignty. But what is nation? Which well comes before even the state. So nation state. So the modern unit of political organization is known as nation state. So what is nation? That is also very important. We have that as one of the important components. So nation is a group of people having feeling of oneness. It is a group of people having feeling of oneness, but that feeling of oneness is known for an aspiration of having one's own independent, separate political existence. Now, say for example, we as Tamil-speaking people, Telugu-speaking people, Hindi-speaking people, Marathi-speaking people, okay, have definitely, undoubtedly feeling of oneness. And what operates here as a bond, which has due to which we have that feeling of oneness, which combines us together, language. There is no doubt about that. Okay, but can we say that since we have this feeling of oneness due to language or on the basis of language, therefore we form a nation like Tamil Nadu, like Andhra, Telangana, or Maharashtra, or for that matter, any state from the northern India speaking Hindi language? Can we say that? No. So, if nation is a group of people having feeling of oneness, then that feeling of oneness has to have a salient feature. Otherwise, we would have said that, look, we speak Marathi, we speak Telugu, and that is something which binds us together. So look, we have the feeling, we are a group, therefore can we look at ourselves as a nation? No. But then what is so distinct about the feeling of oneness which we find in the group, community, collectivity called as nation? What is the peculiarity of that? I did utter that. So what is so specific about that feeling of oneness? The aspiration of separate, independent political existence. Okay, and this aspiration is generally known as the feeling of nationalism. Okay, so what is nationalism? Nationalism. So nation is a group of people having feeling of oneness, but that feeling of oneness is known for, okay, the aspiration, the will, the purpose, the objective of evolving as a separate, independent political entity. Okay, so that is very important. So that feeling of oneness, which we find in a nation having political aspiration or aspiration of independent political existence, is known as nationalism. What is the characteristic feature of nationalism? What is nationalism? If somebody asks a question, what is nationalism? हमने नेशन का थ्रू डिस्कशन किया, ब्रीफ डिस्कशन किया हमने. So what is nation? Nation is a group of people having feeling of oneness, plain and simple. A group of people having feeling of oneness. Okay, but what is so distinct about that feeling of oneness? We stated aspiration of separate, independent political existence.
Okay, so these are two peculiarities of nation as a group of people. Okay, I hope there is no issue with this. Now, nationalism. What is nationalism? And that is the very first topic as far as IGP is concerned. So what is nationalism? Anything which comes to your mind. What is nationalism? Patriotism. But what is patriotism? Aspiration. But what kind of aspiration? To make it simple, make it simple. Can we say that nationalism is a feeling of oneness? So then why are you making so difficult? Nationalism is feeling of oneness. Can we say this? Or there is something more to this? Yes, there is something more to this. But at least to begin with, can we say that nationalism is a feeling of oneness? Okay. But we'll qualify that. We'll clarify that as well. Okay. On what basis do we have that feeling of oneness? Why do we have that feeling of oneness? Maybe common historical background, maybe geography, maybe a common vision of future, maybe culture, yes, maybe religion, maybe so on and so forth. Okay, so that feeling of oneness might be based on a category or maybe combination of categories. Okay, it can be. Now, if we look at ourselves, Indian nationalism as a feeling of oneness, which we find amongst all of us. Okay, do we have that feeling of oneness? We'll say absolutely we have that feeling of oneness. But on what basis? On what basis do we have that feeling of oneness? We think that we are Indians and that Indian identity is something which binds all of us together. But what qualifies that Indian identity? What is the peculiarity of that? What binds us together? What are the peculiarities of the Indianness or that Indian identity? So you will say so many things. So we have history, we have culture, we have heritage, we have so on and so forth. So combination of, let us say, factors, combination of factors. There is no doubt about that. However, having said this, so yes, feeling of oneness. Nationalism is nothing but feeling of oneness. But there is something very specific to this feeling of oneness. Otherwise, can we call term any other feeling of oneness as nationalism? No, there has to be something specific in that feeling of oneness, in that feeling of unity. It is about unity, feeling oneness. So what is that specific? Again, I'll repeat the same thing. That feeling of oneness makes you aspire for, desire for a separate, independent political existence. Now, when did we as society witness this tendency or the feeling of oneness? ये कब आया हमारे में या पहले से था कि देखिए हम इंडियंस है, हम सब एक है. Okay, we are one. There is something which binds all of us together. ये जो feeling of oneness था, ये शुरू से था या colonialism आने के बाद शुरू हुआ? Yes, as a modern phenomena, nationalism did emerge what during colonialism. Okay, there might be certain aspects of our collective identity. There is no doubt about that. We can get back to our culture, civilizational ethos, say, for example. So there are number of traces, let us say, elements, let us say. But if we look at nationalism as a modern phenomena, that kind of or particular kind of feeling of oneness, which is known for the aspiration of separate political existence, then that has to be looked at as a modern phenomena. And I guess that came here, emerged here, came into being here with colonialism, because it is through colonialism that we got acquainted with, got to know, came into contact with so many modern ideas. Okay,
like democracy as a modern notion, like liberty, equality, justice. Importantly, the sense of being an individual. That was very, very important. So when we got to know, came into contact with those ideas deeply influenced us. Okay, the Indian society. And then what happened? Few of us internalized those ideas because uh, the effect was sort of mesmerizing effect. We were attracted to, at least if not the entire society, certain section of our society was deeply influenced by those ideas. Okay, so they internalized that and they started looking at one's own society, that is the Indian society, in a very, very critical manner. And that is how we see the socio-religious reform movement. Okay, the socio-religious reform movement. Look, our society is known for so many bad things: feudalism, caste system, patriarchy, what impact of traditions, superstitions, so on and so forth. So we need to reform our society internally, give away all those bad traits which are part and parcel of a medieval society or a feudal society, and then we are supposed to progress as a modern society. So that is, I think, the crux of the process of social and religious reform movement. And then with this process, at a certain point in time, we what witness something called as the rise and emergence of phenomena of nationalism. Now we cannot fix a date. Look, this is the date. As far as the emergence of nationalism is concerned, it is very, very difficult. But certainly we can point out, we can identify so many factors as responsible factors as far as the rise of phenomena of nationalism is concerned. Okay, now look at two sub-points: political strategies of Indian freedom struggle, constitutionalism to mass satyagraha. Now, one important clarification is needed here. Otherwise, what would happen if we are not aware of that? We'll continue to have that confusion. Look, these are what? Here are two chapters. One is nationalism and the other is the making of Indian Constitution. But as far as the first chapter is concerned, how are we supposed to differentiate between Indian nationalism, which we study in modern Indian history as part of GS 1, and something which we study as part of paper 1 of political science and especially section B, that is IGP. Differentiate कैसे करना है? या दोनों एक ही है? हाँ. Yes. Now there are a number of people even in India today. If you talk to few Kashmiris, okay, we have definitely we had a movement called as Dravidistan. Okay, there are certain sections from Northeast. They do not consider themselves to be part of the yes. So that phenomena is a universal phenomenon, sort of. Okay. So yes, there is no doubt about that. They would say so. Absolutely, they would say so. Now there are. Let us come up with a difference, distinction between the two. If there is a section in Indian Union today, which has serious concerns with the idea of India as a nation, serious concerns, very serious concerns, and therefore the section thinks that, feels and thinks that we are not part of that. We constitute a separate nation. Then are we supposed to recognize as a separate nation or not? Why do you think so? Sociologically speaking, we will have to recognize them, because what is the concept of a nation? The concept of a nation is A, a group of people having feeling of oneness. What is the B? So if that group possesses that what? Separate. That's why it thinks that it is not part of the Indian nation. You got it? So
No. Let me clarify. Let me finish that. So, conceptually speaking, we have to, whether we like it or not, that's a different story. They are, no doubt they are, because that is the term. Okay, that is the notion. Now, would we recognize the claim of that section politically? We would never. Because politically we think, okay, that we constitute a nation. That is, India is a nation. But sometimes there is another description of India as a nation. India is not a monolithic nation. But India is a, now our official policy happens to be, what is that motto? Unity in diversity. Unity in diversity. So we can look at it as an official ideology, but after all, that is an official ideology. Okay. So, Indian nation state, Indian nation is not a mono-national state, but it is multinational state. लेकिन यहाँ national का मतलब कतई citizenship की तरह मत लगाइए, तो otherwise we land in trouble. Okay, so this is how we are supposed to differentiate. So conceptually speaking, if there are sections within India, then we have to recognize them. Conceptually, I'm saying conceptually. Would Indian state recognize that? Would we recognize that? We would never. We would rather say that no. If they have certain concerns, please talk to them, address those concerns, and let them feel that they are also equal partners of the entity called as Indian nation state. Okay, Indian nation state. Okay. What was the point? I lost it. Okay, sorry, I got it. So studying Indian nationalism as a topic in modern Indian history as part of GS1 and studying Indian nationalism as part of IGP. We as student of pol science, as part of IGP, are supposed to look at nationalism, and there are 2 units here. Okay, and those units amply clarify that point. We will not be interested, okay, in so many factual details of those developments, each and everything, because in history we have to take note of that. We have to look into every important development, factual detail, so because that is part of history. But here, instead of going that deeper as far as those development are concerned, we will be looking at that development from the lens of the strategy. From the lens of the strategy. See, Indian society and the rise of nationalism in Indian society as a modern phenomena, number of factors responsible for that. And then one manifestation of that phenomena happens to be establishment of Indian National Congress in 1885. And there are a number of other manifestations, okay, of we becoming nationalistic, or we as Indian society witnessing phenomena of nationalism, that feeling of nationalism, so many manifestations. But INC, establishment of INC happens to be one of the very important manifestation, expression. Look, we constitute a nation, okay, and we have set out on the task of realizing that goal, okay, so on and so forth. But what strategy was adopted by the early reformers or the early leaders of the Congress? We know for sure the moderate strategy. Therefore, that school or that phase or stage of Indian national movement is known as generally, and in the mainstream understanding of Indian modern Indian history, moderates. Okay, so 3 things here. Whenever we are going to look at each and every stage here, from the point of view of strategy, if we focus on moderates, then how did moderates look at Indian society? We know the answer in a very critical manner. Okay. Number 2, what was their perception of colonialism? How did they look at the colonial regime? Now, to put it in a very crude way,
the moderates has a very different understanding of the colonial regime. M.G. Ranade once argued that as if that was a divine arrangement, that as if God, don't interpret it literally, but as if God had sent that dispensation here to what? Enlighten us, to modernize us, so on and so forth. Okay. So this was the typical moderate way of looking at the colonial regime, because they had modern ideas, they had modern practices, they had modern so on and so forth. They were quite progressive, so on and so forth. So a very, we can use that simplest word, positive way of looking at the colonial regime. Then we come to the third thing. Then what strategy did they employ? Now, if we are well aware of the first 2 points, the way in which they looked at society and the way in which they looked at the colonial regime, then the third point obviously becomes clear. So what strategies were used by them? Moderates writing applications, prayers, requesting them, and then importantly appealing to the conscience, yes, of the colonial regime, believing that they are progressive people. They are progressive people. Okay, they know the modern ideas, how to run government in a modern sense of the term. Okay, so on and so forth. So they really thought that if we appeal to their conscience, definitely they would concede certain important demands, reforms, and that would initiate the process of reforms in our society, and thus the general process of progression of our society, modernization of our society shall take place. That was their perspective. So this is one phase. But then eventually what happened? This was replaced by another phase or stage, that is the extremists. Okay. Now, as far as extremists are concerned, let us try to understand them again from those 3 points. A, how did they look at Indian society? We are putting it in a very general sense. We'll specify that later on. They were not critical of the Indian society as the moderates were, but they were very what? Indian society, about Indian society. What was their way of looking at Indian society? The extremists, they argued that so A, they were not critical of Indian society as the moderates were. B, they went back to the Indian past, the Indian civilization, and they sought to find out something from the past of our society. किसी को वेद मिला, किसी को उपनिषद मिला, किसी को ये मिला, किसी को वो मिला. So if you look at the Lal Bal Pal, okay, Lal Bal Pal, Tilak wrote Gita Rahasya. Okay, Aurobindo fall back on the Vedantic tradition. Very interesting. Okay, so thus they argued that, they claimed that there is something which is very specific to the Indian past, heritage and culture. And therefore, we must feel pride about that. We should not look down upon ourselves. Rather, once upon a time, we were great. There is some, because after all, you were supposed to motivate the people. And they had come to a conclusion, that is the extremists had come to a conclusion that the moderate way is not the way to deal with the colonial regime. So getting back to the past, revisiting the past, constitute one of the important element of the strategy of the extremists. Okay. Not nostalgic literally, but because say for anyway we have Aurobindo in our syllabus. Vedanta. Now all is Brahma is the core idea of the Vedantic philosophy. All is Brahma. So all of us are part of the Brahma. But as of now, we are not aware of that, because we are human being. We are ordinary human being, and we are fallen human being. We are fallen. Fallen ka matlab? Fallen.
डिजेनरेटेड है, हम डिजेनरेटेड है, हमें पता ही नहीं कि ये ब्रह्म क्या है. एंड द ब्रह्म, द आइडिया बिहाइंड आइडिया, द अल्टीमेट ट्रूथ. Okay, you can even say the truth behind truth, ultimate truth, the absolute truth is the idea which is taken from that philosophy. Now, the beauty of Aurobindo lies in what? Now, all is Brahma, all of us are part of the Brahma. The element of Brahma well lies within all of us, amongst in each and every person which is part of this collectivity. हम सब में है वो, लेकिन अभी पता नहीं है. पता क्यों नहीं है? क्योंकि हम फालन है, और फालन के तौर पे करते क्या है हम? तो वी लुक एट दिस मटीरियल रियलिटी एज द अल्टीमेट रियलिटी, एंड समहाउ वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू गो बियॉन्ड दिस बिकॉज वी आर एनगल्फ्ड विथ द मटीरियल प्लेजर्स. तो यही हमें लगता है कि यही मोक्ष है. तो वो बोलते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये फालन का व्हाट मैनिफेस्टेशन है. The real reality is something else. The real reality is something else. The real delight is something else. And it lies in rising above. It lies in rising above. आपको वो ordinary human consciousness से ऊपर उठना पड़ेगा. Okay. And for that matter, he suggested the discipline of yoga. Please remember, yoga was popularized, or is popularized not by the present Prime Minister. So we have a great tradition of that, Aurobindo. Okay, so this is quite interesting. So let me cut it short. So, and then the last point here. अब योगा किस चीज के लिए अरविंदो ने बताया? He did not appeal us to follow the discipline of yoga for individual, personal, and private salvation, but rather, but what? So personal, मराठी सांगतो, मराठी मातृभाषा असल्यामुळे, की मला व्यक्तिगतरित्या मोक्ष पाहिजे, हा त्याचा अर्थ होता का? सो व्हाट वाज हिज कंसर्न? इंडिविजुअल सैल्वेशन वाज द कंसर्न? नॉट एट ऑल. किसको मोक्ष प्राप्ति होनी चाहिए? इंडिविजुअल को नहीं है. ही वाज, यस, नेशन, द कलेक्टिविटी. So this is very interesting, that even though that principle, the Vedantic idea, was quite popular and famous for individual salvation, he frees that idea from that limited parochial understanding, makes it broad, and tries to connect with the salvation of the community, society, nation at large. So he was quite creative. Whether we buy that argument or not, we support that or not, that's a different story. So this is quite interesting. So in extremists, be it Tilak, be it Aurobindo, okay, we do find that they had a very different way of looking at Indian society, and especially Indian past. What about their perspective in regard with the colonial regime? We are aware of that. Very critical, deeply critical. So be it Tilak, Lala Lajpat Rai, Aurobindo, so and so, they were quite critical, and they had reason. They say that these are not really liberal people. And even if we appeal to their conscience, they are not going to help us in real sense of the term. These are commercially minded people. They are petty people, and material interests is the end in itself for them. So therefore, instead of relying on them, we must demand Swaraj. So Tilak uses the term Swaraj to mean political independence, and Aurobindo gives a very moral, spiritual dimension to the notion of Swaraj. We'll discuss that later on. And then we come to see that subsequently in 20th century, the Swaraj as a term, as a concept, and even as a practice, acquire sort of central stage in Indian national movement. We will discuss that later on. Okay. Number 3, what strategy was adopted by the extremists in general? What strategy? It was not certainly of writing applications to the colonial rule, but rather it was extremist in the sense
leader like Aurobindo even went to the extent of justifying what? Violent revolution, violence. Okay. So, but he had a very pragmatic way of looking at the strategy. We'll discuss that later on. But they were certainly not committed to something called as non-violence. So initially, so resistance, the passive resistance. Okay. And if possible, if that is practical, then even you can go to the extent of using violence. That was part and parcel of the strategy. Okay. Then comes the Gandhian phase. In a sense, broadly speaking, Gandhian phase seeks to combine both. Okay. Now seeks to combine both means what? There are certain elements in Gandhian strategy which were part of the moderate phase, and then importantly, the extremist phase. A quite unique combination of both the strategies, and we will discuss that later on in greater detail. Don't worry about it. But just one fundamental point as far as the explanation is concerned. Gandhi also talked about the passive resistance. Okay, but he realized the limitations of the passive resistance. Okay, and after realizing the limitations of the passive resistance, he propounded as an alternative strategy, the strategy we all of us are aware of, that the satyagraha. Okay. Now, what is the difference between passive resistance on one hand and the satyagraha on the other hand? What is the difference between the two? And the difference happens to be very, very fundamental. Very fundamental. In satyagraha, you are not supposed to possess or have bad feeling. I'm putting it in a very simple way. You are not supposed to have bad feeling about even the enemy. Okay. Because here, as satyagrahi, somebody who uses satyagraha as a strategy is supposed to focus on and try to do away with not the enemy per se, but the bad feeling within the enemy. And here we come to another point, that Gandhi believed that there is every possibility of transformation as far as human being is concerned. So today, your enemy, that is the exploiter or the oppressor, might be possessed with the bad feelings and the sinful thoughts, so on and so forth, because he happens to be an oppressor. So how can we look at oppressor as a good human being? But the potential to transform himself, herself into a good human. That is what he thought of. Okay, number two. Number three, and therefore he suggested the strategy of non-violence. Okay, so you are supposed to appeal to the reason, you are supposed to appeal to the conscience, you are supposed to appeal to the heart of the oppressed. Because Gandhi believed that someday what would happen? The individual, the oppressor, the suppressor, the exploiter would definitely undergo the transformation. Okay, so that is the peculiarity of satyagraha. Principled commitment to use of non-violence. It was not a convenient choice by Gandhi to be committed to the principle of non-violence. The strategy of non-violence, but a principled commitment. कुछ भी हो, non-violently ही change करना है, ये उनका मानना था. Okay. It was not certainly passive satyagraha. It was based on active participation of the people. So simply speaking, that was not passive. It was very much active. It was rather very, very participative. That is facilitating, that is expecting larger and greater amount of public participation. Okay. And I think Gandhian phase does, by facilitating greater public participation, I think laid what? The foundation of democracy in India in modern sense of it. Because
he had faith in the common masses, the ordinary people, and he appealed them to be part and parcel of the Indian national movement, the freedom struggle, and that is immensely contributed not only to the freedom movement and then the independence of our nation state, but this further democratic polity, establishment of the democratic government. Okay, so thus 3 points always keep in mind. What was their understanding of Indian society? How did they look at Indian society? A, B, their understanding about the colonial rule, and then the strategies adopted by them. That is very, very important. Now, one related thing here, which is very, very pertinent. A debate took place whether to prioritize social reforms or to prioritize political reforms. Now, moderates certainly prioritized social reforms. So, Ranade, Gokhale, Agarkar, okay, and more radicals from the early social reformist, Mahatma Phule. Okay, Stri Shudra Ti Shudra is the phrase used by Mahatma Phule. Stri Shudra Ti Shudra. That is very, very important. Okay, so radical reformist is known as radical reformist. So, and we know for sure as to why did they prioritize the social reforms. We know for sure. But then with extremist phase, what happens? They argued that, okay, fine, social reforms are important. There is no doubt about that, but that is the internal matter. We'll settle it on our own. You have no right to interfere in the internal matter of our society. So now we want what? Swaraj. I mean, independence chahiye. So this is how, and Tilak was very categorical about that. He prioritized Swaraj, that is independence, political independence, and then subsequently partition of Bengal, then the anti-partisan movement, the Swadeshi, so on and so forth. So many developments took place, and it is because of those developments that the political gets priority over the social. वो पीछे ही रह जाता है, वो इतना पीछे रह गया कि आप वो भूल गए, अब वो हम भूल गए हैं उसको. सोशल रिफॉर्म का जो एजेंडा था वो पीछे गया है. अब गांधीयन फेज में उसका क्या हुआ? What happened during Gandhian phase to this? No doubt, political became the central point. Political independence. Okay, so you take the note of non-cooperation, then the civil disobedience, and then the decisive, the Quit India movement. Okay, eventually the political acquires, no doubt about that. Okay, that had actually taken place or had happened during the extremist phase, but Gandhian phase, it becomes quite visible. आप लाहौर का resolution देखिए, complete freedom की demand आती है. So many other developments related to that. Okay. However, Gandhi had also realized, at least to some extent, the significance of the need of the social reforms. And he had his own way of dealing that. And I guess if you take, I'm not saying that in full spirit, so on and so forth, at least to some extent. Okay. And if you look into the constructive program of Gandhi, then you would see anti-untouchability agitation and movement as part of the constructive program. तो उनका एक अलग तरीका था कि उस तरीके के माध्यम से उन्होंने ये जो सोशल इश्यूज थे तो उनको डील करने का उनका एक प्रयास था. लेकिन वो किस हद तक गया था? तो अगर मेन मूवमेंट रिसेस में चल रहा है, बीच वाला, सो नॉन कोऑपरेशन से लेकर सिविल डिसोबीडियंस, वो बीच वाला जो रिसेस वाला फेज बोलते हैं ना उसको, तो उस फेज में उनका ये काम चलता था. उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, तो बीच वाला ये मामला था. एंड देयरफॉर इंटरेस्टिंगली इनफ, अनदर इंपॉर्टेंट लीडर, कंटेम्पररी ऑफ गांधी, Dr. Ambedkar, and we get to see a serious debate between Gandhi and Ambedkar. वैसे देखा जाए तो गांधी के बहुत सारे क्या बोलते हैं
ऐसा कहना नहीं चाहिए, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल एनिमीज थे। सावरकर एक थे, डॉक्टर अंबेडकर एक थे, और कौन थे? नहीं, वो ऐसे नहीं थे। इंटेलेक्चुअल ठीक है, ठीक है, और आई शुड नॉट हैव यूज द वर्ड एनिमी, ओके, इसीलिए मैंने कहा आपको। एंड देन वी हैव वन मोर थिंकर, लीडर एंड थिंकर, रादर थिंकर, M.N. Roy, who was quite critical of Gandhi. Syllabus में भी है, okay. Now they had their own understanding of nation and nationalism, okay. They had their own understanding of Indian society. The others, Savarkar, Dr. Ambedkar, Bose, yes, rightly pointed out, M.N. Roy, even Bhagat Singh. Okay, so no doubt about it. We can bring in so many other important parts of national movement. But Dr. Ambedkar's debate with Gandhi is very important here. And I'll just refer to that and then we'll proceed further. Dr. Ambedkar was vehemently critical of Tilak for prioritizing wrongly the political reforms and thereby relegating social reforms to background. ये क्यों किया आपने? देखिए क्या हो रहा है वो। एक दूसरा, Dr. Ambedkar was also equally critical of the then Indian National Congress, its leader Gandhi, and their program for completely neglecting the issue of caste system, untouchability, and the concerns, the worries, the problems faced by the community Dalit. Okay, so if you are talking of nation, then where are the Dalits in the nation? What place are you going to accord to Dalits in your idea of Indian nation? That was a very pertinent question raised by Dr. Ambedkar. And through his public work, through his writing, okay, he analyzed caste system in India in a very systematic manner. Okay, and after analyzing the caste system in India, he argued, unlike the earlier analysis of caste system in India, that caste and untouchability in Indian society is not just a social problem. It is not just a social problem. It cannot be reduced only to the social evil, but it is more than that. And he argued that this issue is a political problem. So this issue is a political problem. क्योंकि गांधी अंबेडकर में ये डिबेट का डिफरेंस था. So Gandhi used to look at caste and untouchability as a social evil to be redressed. But Dr. Ambedkar argued, ये मत कहिए आप, ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप. ये खाली social evil नहीं है, ये political problem है, ये political issue है. And then he argued that if it is political, then we need a political remedy. We need a political remedy. Now, what political remedy was prescribed by Dr. Ambedkar? No, reservation comes last. Separate electorate, representation kahiye usko, representation, political representation. Dalits require, and they are naturally entitled to, because they are part and parcel of Indian society. So they are entitled to, naturally entitled to representation in our political system. It is not at all there. They are completely absent. So then, if in that context, are you going to reduce that problem only to the social problem? Not at all. Now, caste untouchability being a political problem का मतलब क्या है? Now, make it simple. Can we say that caste determines only our social position? If I say so, would you agree? No. What else does it do? Okay, opportunities and economic status. So उसको broad करते हैं. Caste determines not only your social station, that is station in your society, but it also determines the resources, that is your access to the resources. And when we say resources, we are here essentially talking about the material resources. और इंडिया में material resources का एक बहुत ही बड़ा medium था.
और आज भी है, लेकिन उसमें जितने प्रॉब्लम्स पहले थे आज भी है वो, और रहेंगे शायद, ऐसा लगता है हमें. दैट इज द एजुकेशन. ओके, सो इफ यू get back to pre-colonial era, that is the medieval, the late medieval, then the medieval, असं उलट गेला ना तुम्ही म्हणजे, you would find that certain sections of our society were just prevented, we are just not allowed to have any kind of access to education and learning. That has been our what historical trajectory. That is part and parcel of, and it is because of the earlier Varna system, degenerated caste system, so on and so forth. Okay, so कास्ट इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर का उनका आर्ग्यूमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज नॉट जस्ट अ सोशल प्रॉब्लम. प्लीज ऑलवेज कीप इन माइंड दैट इफ कास्ट determines your access, whether you are going to have access to education, if caste determines your access to resources, then that cannot be seen only as a social problem. It is out and out a political problem. And जब हम political बोलते हैं तो political में करते क्या है? Political is integrally related to, connected with distribution of resources in a society. If caste is associated with that, if caste happens to be itself a determining factor of resource distribution, then the question of caste cannot be reduced to only social problem or social evil. It is undoubtedly political. इसलिए डॉक्टर अंबेडकर डिमांड क्या करते हैं? Political representation to the Dalits, and he makes every attempt during the colonial regime. आप देखिए पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थे वो. ओके, साउथ गोरा कमिटी में रिप्रेजेंटेशन है उनका. ओके, उन्होंने कन्विंस किया, एंड देन ऑब्वियसली ही वो जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स थे तो उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात उन्होंने की थी. बाद में क्या हुआ हमें पता है, वो पुना पैक्ट एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, वी नो फॉर श्योर. Now then comes the policy of reservation, wherein there are three elements. So one is the political representation, which is integral part of reservation, political representation. दूसरा क्या है उसमें? Educational element है उसमें. What access to education, what reservation of seats in admission, colleges, institutions, so on and so forth. And then the scholarship, facilities and scholarship, that happens to be second element of the reservation policy. And third element, all of us are aware of that. Reservation of certain posts in public employment. Okay, तो उसमें political representation बहुत ही important है. बाकी भी है वो, लेकिन political representation की बात वो छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनको पता था अगर नेशन फॉर्मेशन की प्रोसेस यहाँ पे शुरू हुई है तो उस नेशन में दलित्स को हिस्सा क्या मिलेगा. And that was a pertinent question which was raised by. So this is how we are supposed to connect everything from modern Indian history to something called as nationalism, then strategies, then we are going to contextualize in that debate social or political reforms. So this would be our way of looking at these topics. Okay, from nationalism. Now the second is perspective of Indian national movement, liberal, socialist, Marxist, radical, humanist and दलित पर्सपेक्टिव. मैंने थोड़ा सा आपको दलित पर्सपेक्टिव के बारे में बताया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने वो सवाल पूछा, कहाँ दलित है, दलितों का क्या होगा, बाद में क्या होगा, अभी तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बाद में भी कुछ होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है. दैट वाज अ पर्टिनेंट क्वेश्चन. सो दिस इज हाउ दलित पर्सपेक्टिव टेक्स अ वेरी क्रिटिकल टेक ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द प्रोग्राम, सो एंड सो फॉर्थ. वो बाद में हम देखेंगे. तो ये फोकल पॉइंट होना चाहिए, होने वाला है. मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिगेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड देन द डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स. उसमें बहुत सारे फैक्चुअल डिटेल्स भी आएंगे, लेकिन ये पर्सपेक्टिव्स भी हमें देखने हैं. जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग की बात करते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस डीपली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विजिबल है वो, क्या है वो, इसे तो बोलेंगे, किसको बोलेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट. तो आपके दिमाग में जो भी आता है वो कह सकते हैं. डिटरमाइनिंग, शेपिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हाँ, नेशनल मूवमेंट. नेशनल मूवमेंट कैसे भूल सकते हैं हम, नेशनल मूवमेंट. लेकिन नेशनल मूवमेंट वाज नॉट वन यूनिफॉर्म मोनोलिथिक फिनोमेनन.
क्योंकि वो नेशनल, जैसे बिपिन चंद्रा ने आर्ग्यू किया है कि वो अपने आप में क्या थी, वो मल्टी क्लास मूवमेंट थी, वो मल्टी नेशनल मल्टी क्लास मूवमेंट थी, उसमें सब शेड्स थे आइडियोलॉजिकल, उसमें लेफ्ट भी थे, सेंटर भी थे, राइटिस्ट भी थे, इतना उसका कलरफुल मूवमेंट थी वो। डिस्पाइट बिपिन चंद्रा बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन, ही अप्रिशिएटेड द मल्टी क्लास कैरेक्टर ऑफ द नेशनल मूवमेंट, वो वैसा वाला था। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानने में कि ये मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो प्रोसेस है, तो उसका उस इंडियन नेशनल मूवमेंट से ताल्लुक क्या है, रिलेशनशिप क्या है, वो हमारे दिमाग में होगा। दूसरा, ऑब्वियसली वो जैसे लार्जली लूम करता है ना एक, तो वो फैक्टर है कॉलोनियलिज्म, उसको भी हम कैसे भूल सकते हैं। ओके, सो उसका नेचर क्या था, उसकी पॉलिसीज क्या थी कॉलोनियल रूल की, उसमें कैसे कैसे चेंजेस हो गए, ये भी हमें देखना है। और एक ही बात, एक बात ध्यान में रखिए आप, द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वन, 1858 एक्ट, then 1892 एक्ट, then 1909, 1919, 1935। अब 1909 वाला देखिए, तो 1909 वाला उसमें होता क्या है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनल इलेक्टरेट्स है। अब देखिए बाकी चीजें भी शुरू हुई थी, इंट्रोडक्शन ऑफ सो मेनी व्हाट एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंटल अपैरेटस, उसमें इलेक्शन का इंट्रोडक्शन किया गया था, ये सब चीजें हो रही थी, म्युनिसिपैलिटीज का क्रिएशन हुआ था, वो सब हो रहा था। और 1909 में इंट्रोडक्शन ऑफ, और वो 1919 में तो ज्यादा विजिबल बनता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये ऐसा बताया तो गया था, वो असल में तो नहीं आया वो, लेकिन ये बताया गया था। तो 1909 and 1919, if we take both of them together, so certainly yes, both the acts somewhere laid the foundation of responsible government, that is a parliamentary form of government in a very broad and general sense of the term. अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डेफिनेटली कह सकते हैं, बाद में हम डिस्कस तो करने वाले हैं, वो एक चीज थी। 1935 एक्ट में क्या हुआ, मानते तो है हमेशा कि फेडरल फ्रेमवर्क जो है, वो फेडरल फ्रेमवर्क इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट, द 1935 एक्ट है। अब उसमें भी इतने सारे डिबेट है। नाउ स्कॉलर्स लाइक सुभाष कश्यप, वो आर्ग्यू ऐसा करते हैं कि सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द एक्ट is as it is carried forward and made part and parcel of the Indian Constitution, ये उनका कहना है। लेकिन there are number of other scholars who argue otherwise, वो हम बाद में देखेंगे, अभी तो मैं उसमें जाता नहीं हूँ। तो yes, so federal 1935 एक्ट है, तो ये एक तरफ से हो रहा था on one hand, but on the other hand, if you check out 1909 act, 1919 and 1935, the communal electorates which was introduced in 1909, what happens, what in the 1919 act and 1935 act, उसका क्या होता है, वो subsequently are expanded, and thus that becomes a permanent structural what in grappling with the problem and subsequently dealing with the problem. It is because of that we witness partition. ओके, वो जो कम्युनल इलेक्टोरेट का जो था, प्रयास तो बहुत सारे किए गए। अब देखा जाए तो खिलाफत गांधी ने की थी, ओके, उनका उसके पीछे एक पर्पस था। और जैसे 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 हम 30s 40s को आते हैं, तो वो मामला कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, वो इतना डिफिकल्ट बन जाता है, इतना डिफिकल्ट बन जाता है। सो दैट एस्पेक्ट एज पर एज द कॉलोनियल रूल इज कंसर्न, और वो खाली 1900 वाली बात नहीं है, उसके थोड़े साल पहले बंगाल का पार्टीशन हुआ था। Even if the administrative convenience was cited as the reason, we know for sure that what was the real purpose behind that. Okay, so वो जो divide and rule की policy थी, अब ये divide and rule in the form of partition of Bengal was quite visible.
लेकिन उसके भी पहले द colonial administration has adopted so many invisible means to emphasize on our communal identities, our community identities, our communal identities. कास्ट का सेंसस है वो, सेंसस नाम की जो चीज है, जैसे शुरू हुआ तो आइडेंटिटी कौन सी दी गई है और वहां से वो हो रहा है वो। ओके, सो उसके पहले नहीं था ऐसा नहीं कहना है हमें, लेकिन उसका एक खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो जो एक्सरसाइज है सेंसस का। सो लोगों को आइडेंटिटी देना, हम उसको कैसे काउंट करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बनती है। तो वहां से लेकर वो 1909 एक्ट, देन एक्सपांडिंग द कम्युनल इलेक्टोरेट इन 1919 एक्ट एंड सब्सिक्वेंटली 1935 एक्ट, और उसका जो नतीजा निकलना था वो नतीजा निकल के आया है वो। तो ये सब चीजें हमें, तो एक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपने सही बताया है कि नेशनल मूवमेंट, दूसरा है कॉलोनियल रेजिम जो है। ओके, अब तीसरा जो है, तीसरा थोड़ा उसको ब्रॉड करते हैं हम, डिफरेंट आइडियोलॉजीज ओके डिड इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसमें लिबरलिज्म भी है, या उसको थोड़ा ब्रॉड कीजिए, लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी है। दूसरा सोशलिज्म, थोड़ा हिस्सा मार्क्सिज्म का भी है, बिकॉज लीडर्स लाइक नेहरू एंड सो मेनी अदर्स, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बट स्पेशली नेहरू एंड भगत सिंह। नेहरू जब बोलते तो रशियन रेवोल्यूशन का डीपली इन्फ्लुएंस था, देन भगत सिंह, यस ऑब्वियसली। सो लेफ्ट आइडियोलॉजी का जो इन्फ्लुएंस था, so liberalism on one hand, socialism, Marxism on the other hand, and then the Gandhism, so ideology of Gandhism, उसका भी deep influence, और उस पे भी बहुत सारा डिबेट चल रहा है, अभी भी चल रहा है। So we are anyway going to take note of that. In what sense we can say that, look, this is where we get to see influence of Gandhism as an ideology as far as the making of Indian Constitution is concerned. वो तो हम बाद में डेफिनेटली देखेंगे। So ideological influences भी मिक्स है उसमें। एक आइडियोलॉजी, अगर हमने ये पूछा व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द आइडियोलॉजिकल बेसिस, व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉसिबली वी कैन नॉट आंसर दिस बाय जस्ट रेफरिंग टू वन आइडियोलॉजिकल व्हाट स्कूल, वो नहीं है पॉसिबल। तो फिर है क्या वो? तो अभी तो मैं उसका कंक्लूजन बताता हूं आपको, बाद में डिस्कस करेंगे। इट इज द आइडियोलॉजी ऑफ फिलोसॉफी आइडियोलॉजी ऑफ द वेलफेयर स्टेट और वेलफेयरिज्म, और अपने अपने वेलफेयरिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरलिज्म ऑन वन हैंड एंड सोशलिज्म ऑफ द अदर हैंड। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू। ओके, लेकिन फ्रेम क्या है? वो जो वेलफेयर स्टेट की फिलॉसफी है, वेलफेयर स्टेट की फिलॉसफी विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरल, दैट इज लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म, उसका फ्रेम क्या है? किस माध्यम से हम ये वेलफेयर फिलॉसफी, वेलफेयर स्टेट की फिलॉसफी को एग्जीक्यूट करने का हमने तय किया और शुरू भी किया, उसको 50 से शुरू हुआ है वो। इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ और द फ्रेम ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये मत भूलिए आप, लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब इंटरेस्टिंगली बात देखिए, जिसको हमने नेहरू महालनोबिस मॉडल कहा था, जो कांग्रेस उसकी आवड़ी सेशन में सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की बात करती है, तो तब भी लिबरल डेमोक्रेसी थी, और 1991 में इंडियन स्टेट ने ऑफिशियली अपना पॉलिसी न्यू लिबरल पॉलिसी बनाया, यानी कि एलपीजी बनाया। तभी हमारे पास क्या है? फ्रेमवर्क वही है, लिबरल डेमोक्रेटिक है। तो वेलफेयर स्टेट की, वेलफेयरिज्म की व्हाट आइडियोलॉजी पॉलिसी थ्रू डेमोक्रेटिक, दैट इज लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, ये हम देखें। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टेक नोट ऑफ। सो दिस इज वन सेक्शन which overlaps with, which is part of the modern Indian history. Okay, now, now they were no doubt glorifying. There is no doubt about that. Most of them, most of the extremists were glorifying the Indian past. There is no doubt about that. There are exceptions. अब देखिए,
जो पता नहीं पीएम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उसको। सावरकर डिड इम्पोर्टेंटली सेड दैट गाय इज अ उपयुक्त पशु। अब उसको इंग्लिश में कैसे करें? काउ इज अ यूजफुल एनिमल। आप किसी ने सुना, मेरा भी सुना तो मुझे भी पकड़ के ले जाएंगे। कहाँ कहा, किसने कहा है ये? यू गॉट इट। अब देखिए, तो हर कोई चीज ग्लोरीफाई नहीं है। जैसे मैंने अरविंदो का कहा, अरविंदो वांट while propounding his notion of nationalism, he warned Indian people not to confuse nationalism with patriotism. He said categorically, because according to Aurobindo, patriotism happens to be a very parochial kind of feeling. क्योंकि patriotism का मतलब क्या है? patriotism का मतलब हम इंडियन पीपल है और हमारा कमिटमेंट, हमारा लॉयल्टी खाली इंडियन पीपल तक ही सीमित रहेगा। Whereas Aurobindo was not at all limiting his philosophy, his ideas to only the Indian society and the Indian people. He was talking about world spiritual revolution. He was talking about world spiritual revolution. तो उन्होंने ये वार्न किया है। ओके, और यस, तो एक, there is no doubt that there is an element of glorification of the Indian past. Okay, but there are few thinkers and leaders who engage with Indian past in a very creative and critical manner. अब देखिए, स्वराज, गांधी ने मतलब कैसा लगाया उसको? सो रूल ऑफ सेल्फ एंड रूल ओवर सेल्फ भी बोला है, उन्होंने बोला। ओके, तो ये एक बहुत ही अलग तरीके का उसका क्या है, इंटरप्रिटेशन है। नॉन वायलेंस, नाउ डीप इंपैक्ट ऑफ जैनिज्म ऐसे बोलते हैं हम। लेकिन जैनिज्म में जैसे, एटलीस्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट पर से द फिलॉसफी, लेकिन जिसको बोलते हैं ना कि एक रिलीजन कोड ऑफ कंडक्ट वाला होता है जो प्रैक्टिस हम करते हैं, तो उसमें नॉन वायलेंस किस चीज के लिए एम्प्लॉय किया जाता है? रिलीजन एज ए प्रैक्टिस के तौर पे। तो मेरा सैल्वेशन है वो, मुझे क्या, मुझे मोक्ष प्राप्ति करनी। तो इंडिविजुअल है ना पर्पस वो। गांधी क्या करते हैं? he frees non-violence from that individual concern, the personal concern, and he makes non-violence as a strategy to be adopted by the collectivity. नेशन की स्ट्रैटेजी होती है ना वो। इंडियन नेशन को फ्री करने के लिए गांधी ने नॉन वायलेंस सत्याग्रह किया, ये बोलते हैं ना। तो कोई वहां पे पर्सनल चीज के लिए बोलते हैं, उन्होंने तो एक कोड ऑफ कंडक्ट, बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट है, एक कोड ऑफ कंडक्ट था कतई सत्याग्रह को आपको पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ये है कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा उसका, उन्होंने कहा था। सो गांधी व्हाट आस्क्ड ऑल ऑफ अस नॉट टू यूज सत्याग्रह फॉर पर्सनल, फॉर इंडिविजुअल, फॉर प्राइवेट कॉज। सत्याग्रह वाज टू बी यूज्ड फॉर पब्लिक कॉज। तो ये भी, ये क्रिएटिविटी भी है। ओके, और ये थोड़ा बहुत ये होगा कि मॉडरेट्स ओरिएंटलिस्ट अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करते थे, ऐसा मानना थोड़ा एक्सेसिव होगा। थोड़ी सिमिलैरिटी डेफिनेटली है, और वो जो बहुत ही पॉजिटिवली देख रहे थे, यानी कि yes, no doubt about that, but why so? Was that view reflective of the racism? Was that view reflective of racism, the racial superiority? They were not part of that. They never subscribed to that kind of understanding. वो वैसा नहीं था। Okay, so उसमें डिफरेंस है, थोड़ा सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो तो डेफिनेट, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग क्या था हमें पता है। Because they wanted Indian society to reform what in social domain as well as in respect with the religious domain. Okay. अब ये एक सेक्शन हुआ, बाकी तीन है, let us look into that. Constitution. So ये दूसरा एलिमेंट है। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। ओके, और चौथा है पॉलिटिकल प्रोसेस। ओके, नाउ सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन। सो पहला क्या था, ये ऊपर वाले दो टॉपिक मैंने कहा कि ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट है, वो पहला सेक्शन हमने बोला। सेक्शन बी के ही सब सेक्शन हम कर रहे।
एक बोलिए उसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाला, जिसमें 2 टॉपिक है। दूसरा क्या है उसमें? दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हाउ आर वी गोइंग टू लुक एट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज स्टूडेंट ऑफ पॉल साइंस? तो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क तो आपने पढ़ा होगा, वो फिर से पढ़िए वो। अब उसमें एक क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, वैसे तो हम शुरू कैसे करते हैं, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स, then what is the nature of Indian constitution? So what kind of constitution have we adopted? तो हम बोलते हैं कि वो कैसी है, क्या क्या बोलेंगे आप? इंपॉर्टेंट फीचर्स बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। वो तो वो ग्रांटेड है, सॉवरिन है, वो ग्रांटेड है। हाँ, व्हाट? इट इज अ ब्लेंड ऑफ rigid and flexible, no doubt about that. Anything else written है वो? Exactly, what else? हाँ, फेडरल बोलिए उसको, फिलहाल तो हम फेडरल बोलेंगे उसको। पार्लियामेंट्री है उसमें। ओके, अब अगर आपको ये पूछा गया कि नेचर बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बताइए, तो उस फीचर आप छोड़ देते। फीचर तो आपने बताया, बहुत सारे फीचर बताए, फोकस ऑन नेचर। ओके, सो यस, वी विल टेक नोट ऑफ 16-17 important salient features of constitution. Anyway, we'll do that. 1, 2, nature of Indian constitution. Nature क्या है? नेचर तो वो लिबरल डेमोक्रेटिक है, लिबरल डेमोक्रेटिक है, और उसमें आप पार्लियामेंट्री ये सब चीजें कह सकते हो। दूसरा, नो, दूसरा है फेडरल, दूसरा है फेडरल नेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्सेप्ट। पहला है लिबरल डेमोक्रेटिक। एनीवे, विल डिस्कस व्हाट इज मीन बाय लिबरल डेमोक्रेटिक लेटर ऑन, डोंट वरी अबाउट दैट। लिबरल डेमोक्रेटिक। दूसरा है, दूसरा क्या कहा मैंने? फेडरल है। अब फेडरल में कैसा फेडरल है वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनली व्हाट प्रोवाइडेड फॉर 2 levels of government, constitutionally created 2 levels of government है। Okay, one the union and other is the state. We know for sure we have 3 lists, union, state and the concurrent list, we know for sure. Okay, and to confirm the fact that even the Supreme Court of India in so many judgments from Keshwanand Bharati onwards till the recent one, say for example, included the federal nature of Indian constitution in doctrine of basic structure. That happens to be part and parcel of the doctrine of basic structure. तो पहला है लिबरल डेमोक्रेटिक है, दूसरा है फेडरल है, ये क्वाजा है या ये है वो है, हम बाद में देखेंगे। दूसरा, तीसरा क्या है? सेक्युलर, दैट इज इंपॉर्टेंट, सेक्युलर। ओके, और एनीवे सेक्युलर का तो डिस्कशन हम करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल इंपॉर्टेंट ट्रेट्स ऑफ सेक्युलर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्युलर? तो इंडियन स्टेट शैल नॉट हैव इट्स ओन ऑफिशियल रिलीजन, ए बी। तो क्या करेगा वो? रिलीजन से दूर रहेगा। इंडियन स्टेट शैल स्टे अवे फ्रॉम रिलीजन्स, लेकिन उसको लिटरली मत लीजिए, लिटरली मत लीजिए। ओके, ए बी होगा, यस, एज ही राइटली पॉइंटेड आउट, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ओके, as far as the existing religions are concerned. So उसको equal regard for all religions, ये भी कह सकते हो। Okay, that is, here we expect in states code of conduct with the existing religions, what principle do we expect here? Principle of non-discrimination. Okay, principle of non-discrimination, the principle of equality, कोई भी बोलिए, non-discrimination। Okay, 2, अब ये दोनों को इकट्ठा कीजिए। पहला क्या था? स्टेट शैल नॉट हैव ऑफिशियल रिलीजन। दूसरा क्या है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो दोनों को मिला के डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं, एंड दिस कैन बी सीन एज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेक्युलरिज्म और बीइंग सेक्युलर, अ सेपरेशन इज सॉट बिटवीन स्टेट ऑन वन हैंड एंड रिलीजन ऑन द अदर। अ सेपरेशन इज सॉट, सेपरेशन is expected, okay, provided for. But again, let us be very clear that this separation is not a wall-like separation. Let us be always keep in mind. It is not going to be a
वॉल लाइक सेपरेशन. ओके, सेपरेशन तो है, लेकिन वो वॉल लाइक, वॉल का मतलब क्या है? कंप्लीट सेपरेशन नहीं है. ओके, उसकी तरफ बाद में आएंगे. एक दूसरा है, स्टेट हैज ग्रांटेड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया राइट टू कॉन्शियस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड रिलीजन. ये भी दिया है, एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ सेक्युलर. ओके, दैट इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ सेक्युलर. कॉन्शियंस का और रिलीजन का आपको राइट दिया गया है. ओके, अब दूसरा उसका हिस्सा ये है, उसका ही ये जो दूसरा है ना, स्टेट शैल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन while treating with, while conducting with all what citizens बोलिए, individuals बोलिए. तो अपने इंडिविजुअल्स की तरफ कैसे देखेगा? तो फिर से वही हम कहेंगे, जैसे रिलीजन के बारे में हमने कहा है कि ये सुपीरियर, ये इंफीरियर, ये इंपॉर्टेंट, ये लेस इंपॉर्टेंट, ऐसा कहेगा क्या स्टेट? नो. सो फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन. आर्टिकल 15 पढ़िए क्या है, इवन 14 पढ़िए क्या है. स्टेट इज नॉट सपोज टू डिस्क्रिमिनेट अमंग्स इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ, बाकी भी चीजें हैं, लेकिन रिलीजन उसका एक आधार है, उसके ऊपर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. सो न्यूट्रल है. आपका रिलीजन क्या है, आप किस रिलीजन के है या नहीं है, हमें कुछ लेना देना नहीं है. वी विल लुक एट यू एज सिटीजन. ओके, तो ये दूसरा है. राइट टू रिलीजन भी है, or even if you enjoy right to religion and follow religion, the state is not going to discriminate, okay, positively, negatively, whatever it is, on the basis of your religion. ये दूसरा है. अब तीसरा है, which is very important, और वो इंडियन इथॉस से आया है, इंडियन इथॉस से आया है. तो वो क्या है? पहले प्रिंसिपल का डिस्कशन करते वक्त भी मैंने कहा, लेकिन उसको थोड़ा सेपरेट हम निकालने वाले हैं. स्टेट इज नो डाउट गोइंग टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन व्हाइल कंडक्टिंग इटसेल्फ विथ द एग्जिस्टिंग रिलीजन्स. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. सो इक्वालिटी बोलते हैं उसको, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हम बोलते हैं, या उसको सर्वधर्म समभाव ऐसे भी बोला जाता है. हाउएवर, स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशनली अथॉराइज्ड to interfere in religious matters, but not every now and then, not arbitrarily, but state's interference has to be based on or has to be guided by certain provisions of the Constitution of India. If we read Article 25 carefully, so Article 25 का मेन हिस्सा क्या है? What is the main provision under Article 25? Granting right to conscience, okay, freedom of conscience and religion है वो, okay, वो है. उसके exceptions पढ़िए. तो exception में एक important exception ये है कि state can, और 26 भी पढ़िए, 25 क्योंकि उसमें 25, 26, 27 and 28 है. ओके, तो 26 में राइट टू रिलीजन है, लेकिन वो इंडिविजुअल या सिटीजन का राइट टू रिलीजन नहीं है, वो रिलीजियस डिनोमिनेशन का, उसको पॉलिटिकल साइंस के भाषा में ग्रुप का राइट टू रिलीजन. सो 25 ग्रांट्स राइट टू रिलीजन टू इंडिविजुअल एंड 26 ग्रांट्स राइट टू रिलीजन टू ग्रुप है. एक इंडिविजुअल को है, दूसरा ग्रुप को है. अब ये क्यों किया है हमने? ये क्यों किया है? खाली इंडिविजुअल को देते तो काफी नहीं था क्या? हमने ग्रुप को क्यों दिया है? और ग्रुप को राइट टू रिलीजन देने का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वे आर फुल्ली अवेयर, rather well aware of the presence of religion and religions in our society, and not only presence but substantial influence of religion on all of us. So इसका ये मतलब हुआ कि even though as part of secularism we expect religion to be part of the private, to be part of the personal sphere, but here
we have recognized the public presence of the religion. We have recognized what? The public presence of the religion. और ये बाद में डिस्कस ज्यादा करेंगे. Don't worry about that. If it sounds slightly complicated, you don't worry about that. Okay. तो इसीलिए 26 के तहत क्या अधिकार दिया गया है हमें? If you form part and parcel of something called as the religious denomination, then you can establish institution, you can own property, you can dispose of that as per the law, और religious purpose के लिए institution आप establish कर सकते हो. Purpose क्या है? Religion. Purpose है religion. Okay, लेकिन वो ग्रुप का राइट बोला है. उसको क्या कौन सा राइट बोला? इंडिविजुअल राइट नहीं है, लेकिन वो ग्रुप राइट है. और इंटरेस्टिंगली इनफ, जब आप 25 और 26 का कॉन्फ्लिक्ट देखोगे कि बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि 25 में राइट टू रिलीजन है इंडिविजुअल का, और 26 में क्या है? राइट टू रिलीजन ग्रुप का है. आप ट्रिपल तलाक केस देखिए, शबरीमाला केस देखिए, इतनी सारी इंटरेस्टिंग केसेस है जिसमें ये दो जो आर्टिकल्स है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के दो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दो आर्टिकल है, लेकिन these articles been used by concerned parties for cross purposes. क्योंकि जिनको शबरीमाला का प्रैक्टिस सपोर्ट करना था of prohibiting women from entering the sanctuarium, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये हमारे ग्रुप रिलीजियस राइट का हिस्सा है and we are constitutionally entitled to follow that. उन्होंने कहा कि भाई वो जो विमेन है ना, उनको इंडिविजुअल राइट टू रिलीजन भी है, और फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 भी है, वो है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ है. तो दिस इज हाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो बाद में हम डिस्कस डेफिनेटली करेंगे. सो गेटिंग बैक टू द पॉइंट, इन secularism, as far as the Indian context is concerned, group religious rights been granted. That is, right to religion also is granted to groups. और वो क्यों किया है हमने? क्योंकि हमारा सोसाइटी वैसे था, अभी भी है वो, और वो जो रिलीजन का पब्लिक प्रेजेंस है, पब्लिक, हम पब्लिक ही है ना, तो वो पब्लिक प्रेजेंस कहीं ना कहीं तो हमें रिकॉग्नाइज करना था, वो हमने उस तहत किया है. लेकिन फिर भी स्टेट इज एंटाइटल्ड. अब देखिए, रिलीजियस डिनोमिनेशन में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है क्या? डेफिनेटली कर सकता है. क्यों कर सकता है? टू assess whether the transactions, okay, as part of the denomination, उसके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है, उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, यानी कि सेक्युलर पर्पस के लिए, मटेरियल पर्पस के लिए उसके अधिकार में स्टेट हस्तक्षेप कर सकता है. डेफिनेटली वो एक आधार है उसका. सो स्टेट कैन इंटरफियर, बट ऑन व्हाट ग्राउंड? द नॉन रिलीजियस. यानी कि नॉन रिलीजियस का मतलब अभी फिलहाल हम सिंपलिस्टिक तरीके से मटेरियल रियल है, यानी कि सेक्युलर है. नॉन रिलीजियस, मटेरियल, सेक्युलर, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, वो अधिकार स्टेट को डेफिनेटली प्राप्त हुआ है. और 25 अगर हम रीड करते हैं तो उसमें एक प्रावधान है, एक प्रोविजन है, स्टेट कैन इंटरफियर इन डोमेन ऑफ रिलीजन और रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पज ऑफ throwing open Hindu religious institution for the purpose of what? Social reforms. ये 25 में लिखा है, एक्सेप्शन है वो. यानी कि you have right to religion, no doubt about that, but state can interfere in your religious affair. For what purpose? For the purpose of reform. Make it simple. For the purpose of social reform. Okay. अब कोई कहेगा कि हिंदू क्यों लिखा है खाली उसमें, बाकी का क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका लॉजिकल कारण ये है कि हिंदू कॉन्स्टिट्यूटेड एंड स्टिल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी. ओके, गड़बड़ भी ज्यादा थी, इसलिए वो भी एक कारण है उसका. ओके, सो दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड एज फार एज द नोशन सेक्युलर इज कंसर्न्ड. ओके, एनीवे वील डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल लेटर ऑन. So what is the nature of Indian Constitution? Liberal, democratic, federal, and then secular. Now एक खाली last वाला point बता के हम आगे जाएंगे. Granville Austin, who happens to be a very important authority on not only Constitution of India, but even the implementation of Constitution of India. That is a constitutional process, which is generally known as constitutional process. उन्होंने Indian Constitution का nature describe करते समय ये कहा था
कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोशल डॉक्यूमेंट कहा है। क्या कहा है उसको? सोशल। वैसे तो हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को प्राइमरीली कैसे देखते हैं, किस तरीके का डॉक्यूमेंट करके देखते हैं? पहले लीगल बोलते हैं उसको, लीगल। ओके, फिर पॉलिटिकल। सो लीगल पॉलिटिकल, उससे ज्यादा नहीं है। तो वो बताते हैं कि नहीं, वो क्या है? सोशल डॉक्यूमेंट है। माधव खोसला, वन ऑफ द कंटेम्प्रेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर, उन्होंने एक किताब लिखा है, इंडियाज फाउंडिंग मूवमेंट। इंडियाज फाउंडिंग मूवमेंट। गौतम भाटिया, अनदर स्कॉलर अथॉरिटी ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने किताब का नाम ही है इंडियाज ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन बोला है उसको। क्या नाम दिया है उसका? इंडियाज ट्रांसफॉर्मेटिव। अब देखिए, ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म वी एज इंडियन पीपल were subjects of the colonial state. We were subjects. We were not citizens. We were subjects. ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकते हैं हम? We were subject citizens of the colonial state. Okay, subject citizens. कुछ अधिकार हमें नहीं थे, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन transform that relationship between colonial state on one hand and the Indian people on the other hand into what? A free, independent, democratic republic on one hand, and we on the other hand as citizens of a free nation state with how many fundamental rights? 6 broad categories of fundamental rights. So transformative, किसने कहा है? ये किताब किसका है? गौतम भाटिया का है। Okay, so yes, why not? Absolutely yes. There is no doubt about that. So there is something called as social besides the legal and besides the political. That is the point. There is yes legal, there is no doubt about that. There is yes political, another important aspect of Constitution of India, but there is something called अब Article 17 को कैसे देखेंगे? Article 18 को कैसे देखेंगे हम? Article 17 is about abolition of untouchability and Article 18 is abolition of titles. Okay, उसको कैसे देख? और बाकी 14 भी देखिए ना, 15 देखिए, तो उसमें जिन फैक्टर्स का, ग्राउंड्स का जिक्र किया है अंडर आर्टिकल 15, तो इट बिकम्स क्वाइट क्लियर। इसीलिए तो 14 to 18 एक ही आर्टिकल का हिस्सा, एक ही टाइप का हिस्सा है। उसका नाम क्या है? राइट टू इक्वालिटी। दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड देयर आर नाउ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक ही झटके में दे दिया हमने। Whereas the conventional wisdom at that point of time warned Indian constitution makers not to go for universal adult franchise. Okay, और माधव खोसला का आर्गुमेंट है उसके बारे में, वो शायद मैंने पहले बताया आपको कि वेस्टर्न डेमोक्रेटिक थियोरिस्ट in those days believed that democracy is not a plant which can be sown every year or any society, every society, but it does require a particular kind of society. Okay, and as part of that understanding, they argue that Indian society does not have that conducive atmosphere. So therefore, they wanted the constitution makers and leaders of free India to wait for some time and then introduce the franchise and then subsequently adult franchise into certain or in the form of certain phase, or let us say in a phased manner. Immediately मत कीजिए, क्योंकि आपके लोगों को अवेयरनेस नहीं है, आपके लोग बहुत सारे इलिटरेट है, so on and so forth. Okay, so make it simple. उनका कहना ये था, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, educated society is the requirement. Educated, aware society is one of the requirements of adopting democracy. डॉक्टर आंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने ये कहा, we look at democracy other way around. We look at democracy as a means to educate people. We look at democracy as a means to educate. कितनी बार हमने शायद ये कहा होगा, आपने भी कहा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? He looked at and he said, we look at democracy as a means to educate people. Because if we give them a franchise as adults, okay, then they would cast their vote, become part of the political process, subsequently administrative process, and thus democratic participation
will facilitate participation of people as far as the democratic process is concerned, and that would definitely be seen as, that can definitely be seen as one way of what, educating people. तो ये रिलेशनशिप अलग ही उन्होंने बताया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उनका डेफिनेटली स्पीच है वो. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is not only a legal and political document, but there are number of provisions, maybe visibly provided for, or maybe at the level of implication, okay, intangible, let us say. Those provisions aim at somewhere transformation in our society. Therefore, it is described by Granville Austin as social document. Okay, तो ये मेरे ख्याल से एक हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस का. दूसरा हिस्सा है, यस, नो कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसका कुछ नहीं है. नो, वो स्टेट का था वो, यानी कि स्टेट ने जो बाद में पॉलिसी ली. हाँ, उस तरफ हम आ सकते हैं, लेकिन नहीं, वो डीपीज का पार्ट है. I'm going to come to that point. Don't worry about that. लेकिन उसकी वजह से वो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है. ओके, ये तो yes, there are very important provisions which provide for socio-economic rights, say for example, which are part of the directive principles of state policy. Undoubtedly, those are important, but they are non-justiciable. Okay, I'll come back to that. So first point क्या है, ये liberal democratic, federal, secular and social document, ये हिस्सा है. This is how we are going to look at our constitution. Number one. Number two, दूसरा जो है, what kind of scheme of separation of power as part of the governmental organization is put forth by, provided for by Constitution of India. वो तो हमें पता है, वो मिक्स दोनों चीजों का है. एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है और दूसरा फेडरल सिस्टम है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड फेडरल. तो एक है हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ पावर और दूसरा है वर्टिकल. एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल है. एंड देन देयर इज वन मोर पेक्यूलियरिटी ऑफ इंडियन स्कीम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, वो है प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जिसमें इलेक्शन कमीशन है, कैग है, फाइनेंस कमीशन है, यूपीएससी है, ये सब बॉडीज है. उसको हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी का हिस्सा नहीं मान सकते. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया है वो, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन है, इसलिए तो हम इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहते हैं. उसका ये मतलब है कि एज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वी हैव लेजिस्लेचर, वी हैव एग्जीक्यूटिव, वी हैव जुडिशरी, and as part of that we have a very interesting relationship between our parliament on one hand and the executive on the other hand. और वो relationship हमें पता है, बाद में हम discuss करेंगे कि the party which wins majority or coalition of party which wins majority in Lok Sabha, that is the lower house, forms government, and that is how it works, we know for sure. And the government stays in power as long as it enjoys the support of the Lok Sabha. These are the basics of the parliamentary democracy, we know for sure. बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे. So parliamentary democracy is about having integral relationship between legislature on one hand and executive on the other hand. Parliamentary democracy thus is about collective responsibility of the government to the legislature, to the parliament. इसलिए जब तक लोकसभा का आपको समर्थन है तब तक आप सत्ता में रहोगे. लोकसभा ने अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया तो आप गए. ओके, वी नो फॉर श्योर. सो योर बर्थ एज वेल एज डेथ, दैट इज ऑफ द गवर्नमेंट, डिपेंड्स ऑन सपोर्ट ऑफ द लोकसभा. ओके, सो इसीलिए ये जो सेपरेशन कहा हमने, सो डू वी हैव अ क्लियर कट वॉल लाइक सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव? वी डोंट हैव. The one which the one which exists in America? No, we don't have that kind of separation of power, because we know for sure America happens to be a presidential form of democracy. Ours is a parliamentary. इसीलिए वो जो separation है ना, at least between two branches, legislature and executive, parliament and government, उन दोनों में जो separation of power है वो wall like नहीं है, वो rigid नहीं है, वो porous है.
क्योंकि हमारे मिनिस्टर्स ड्यूअल मेंबरशिप एंजॉय करते हैं, वो एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर है और वो हमारे लेजिस्लेचर आइदर द राज्यसभा और लोकसभा के भी वो मेंबर है, एंड द गवर्नमेंट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा पर्टिकुलरली। ओके, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई करते वक्त क्या स्कीम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, ये पार्लियामेंट्री का हिस्सा करके हम देखेंगे उसको। दूसरा फेडरल है। फेडरल में तो दो लेवल अप है, वन इज द यूनियन लेवल, द अदर इज द स्टेट लेवल। अब उसमें दो तीन और चीजें हैं, बाद में देखेंगे, लेकिन एक एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आप अभी ध्यान में रखिए, सबको पता है आपको। देयर आर नंबर ऑफ फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, we'll look into those later on, but one important feature needs to be cited out right in the beginning, that is the asymmetry. We had article 370, the case is still going on. Let us wait, Supreme Court of India would do something completely different. Okay, then we have article 371, A, B, C, D, बहुत सारे ऐसे सब आर्टिकल्स है। ओके, ये दूसरा एग्जांपल है उसका। तो उसमें क्या किया है हमने, तो इवन दो वी हैव प्रोवाइडेड फॉर सेकंड लेवल ऑफ फेडरल डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ स्टेट्स, लेकिन हमारे सब स्टेट्स इक्वल पोजीशन वाले है क्या, नहीं है। अब थियरी में तो कश्मीर को अलग स्टेटस था, थियरी में था, प्रैक्टिस में वो तो नहीं था, वो थियरी में था। ओके, why did we have 370 and why do we continue to have 371 A, B, C, D, E, F? Why do we have that? I think the answer lies in attempt of constitution makers of India, the endeavor of constitution makers of India and thereby constitution of India to deal with the specific needs and requirements of those regions. And this is the beauty of Indian federalism. उसके लिए हमें जे मराठीत मला सुचते तक्रार गारण करायचं कारण नाहीये, बघा असं असं होतं काश्मीरमध्ये, आम्ही काय करून टाकलं त्याचं, म्हणजे असं काय करायचं कारण नाही म्हणजे ते। ओके, सो दॅट वॉज वन वे ऑफ व्हॉट, accommodating the diversity, the diverse needs. Why do we have 371? Why do we have that? Even Maharashtra is part and parcel of that. Not entire Maharashtra, but one region of Maharashtra very much is part and parcel of that. Okay, so this is how we have to take note of the federal division. So union है, state है, लेकिन asymmetry है, और वो asymmetry कोई illogical, irrational feature नहीं है, तो वो क्या है, which is part and parcel of Indian federalism and unique way to deal with the specific requirements and needs of certain regions है वो। Okay, कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी का मैंने आपको बोला है। ओके, अब उसका जो, सो दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ लेटर से सेक्शन बी, जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। सो वन इज द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर नेचर, और दूसरा है द स्कीम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अब तीसरा जो एलिमेंट है उसमें, उसको हम रिफ्रेम ऐसे करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, खाली हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है हमें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। नाउ व्हाट इज मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस सिंपली स्पीकिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 26 जनवरी 1950। उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ है आप देखिए, इन व्हाट वे वी हैव व्हाट कंडक्टेड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसका कंडक्ट कैसे हुआ है, इन व्हाट वे वी हैव worked the federal framework, federal form of government, functioning कैसा है उसका, in what way that framework has worked, that framework has functioned, उसका functioning कैसे हुआ है, so parliamentary का functioning कैसे हुआ है, then federalism का functioning कैसे हुआ है। खाली हमें federal provisions क्या है वो पता करने से चलने वाला नहीं है, उसका हुआ क्या है असल में, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ओके, सो डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट की बात की जाती है, वो भी हमें देखना पड़ेगा, बाद में देखेंगे उसको। ऑर्डिनेंस पावर जो है उसका कोई एक पर्पस है, लेकिन उसका मैनिपुलेशन या मिसयूज हो रहा है, हुआ था पहले भी हुआ था, तो उसके बारे में हमें जानना है। तो गवर्नर का ऑफिस देखिए, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द सेकंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द स्टेट,
लेकिन उनका कंडक्ट देखिए, उनका बर्ताव देखिए। तो बहुत सारे केसेस में इट हैज बीन डेट्रीमेंटल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इथॉस। ओके, तो वो भी हमें, सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का मतलब प्रैक्टिस द वर्किंग ऑफ व्हाट, द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कैसे उसको वर्क किया है। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम जब हम बोलेंगे तो पार्लियामेंट का वर्किंग कैसा है, उसमें राज्यसभा लोकसभा आएगा। देन द स्पीकर का वर्किंग कैसे है वो भी हम देखेंगे, दैट इज वन थिंग एज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। दूसरा ऑफिस, द वर्किंग ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ ऑफिस, प्रेसिडेंसी जिसको बोलेंगे या प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस, उनका क्या है। तो इफ वी हैव वन पार्टी रूल, then the office of the president is not likely to become important if we have one party rule. Okay, but if we have hung parliament and coalition government, then the office of the president is likely to become important. अब ये मैंने जनरल बताया, उसका हुआ क्या है वो बाद में हम डेफिनेटली देखेंगे। ओके, दूसरा, तीसरा है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, दैट इज जुडिशरी। ओके, जुडिशरी, तो जुडिशरी का फंक्शनिंग राइट फ्रॉम 50 टिल डेट, और उसमें इतने सारे एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, then federalism, especially the center-state relationship, then the office of the president, so many things. And so one aspect of the working of judiciary is going to take us to understanding of the process of the relationship between judiciary on one hand and the legislature on the other. दूसरा उसका aspect of definitely होगा its relationship with the executive. ओके, और तीसरा एस्पेक्ट ये भी हमें देखना है, जुडिशरीज रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग PIL क्या है, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। ओके, वो देखेंगे। एंड एज पार्ट ऑफ दैट इतने सारे डेवलपमेंट्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में हुए हैं, अगर उसमें लैंडमार्क ही हमें देखना है तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, दूसरा PIL हमने जैसे कहा है, देन जुडिशियल एक्टिविज्म, it is a very important phenomena generally seen as the post-emergency development, but decade of 70s. And then of late, we have been talking of judicial overreach. वो तो ड्यूरिंग कोएलिशन के दौरान बहुत सारा उसका जिक्र हुआ, थोड़ा 14 में कम हुआ है, क्योंकि 14 में कुछ अलग ही हुआ है, 2014 से लेकर आज तक कुछ अलग मोमेंट इसका हुआ है। तो पहले वाले जो 3 डिकेड्स थे, 1989-19 से लेकर 2013 तक, तो उन दौरान हमारा जुडिशरी इतना असर्टिव हुआ था कि कई स्कॉलर्स ने कहा कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज बिकम द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम कोर्ट, ये कहा था उन्होंने। लावण्य राजमनी, वन ऑफ द स्कॉलर्स हु आर द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम कोर्ट है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ था। तो क्यों हुआ, ये क्यों ऐसा कहा गया? बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे थे कि वो लॉ की तरह थे, लॉ ये लेजिस्लेचर की तरह ही बिहेव कर रहा था, और कई डिसीजंस ऐसे हैं कि उसने खुद पॉलिसी शायद बनाई है, या ये देखिए ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, या पॉलिसी अल्टरनेटिव्स भी कोर्ट ने बताए हैं, तो ये भी हुआ है। सो उसको देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रेफरेंस, प्रताप भानु happens to be one of the, Mehta happens to be one of the editor of that ऑक्सफोर्ड कंपेनियन ऑन इंडियन पॉलिटिक्स है। तो उसमें डिस्क्रिप्शन जो लिखा है ये कि जुडिशरी इन लेजिस्लेटिव अवतार एंड जुडिशरी इन एग्जीक्यूटिव अवतार, दैट इज जुडिशरी इनैक्टिंग लॉज एंड जुडिशरी इनैक्टिंग फ्रेमिंग पॉलिसीज। तो ये हुआ था, तो फिर हमें ये देखना ही पड़ेगा कि क्यों आया ऐसा, व्हाट फैक्टर्स लेड टू दिस काइंड ऑफ फिनोमेना, और दूसरा उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। If you check out PYQs, you would find out so many questions on this. कि जुडिशियल एक्टिविज्म का डिबेट बताइए, उसका इम्पैक्ट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या हुआ है। तो जब हम इम्पैक्ट देखेंगे तो पहला तो रेफरेंस पॉइंट हमारा ये होगा, और वो इंपॉर्टेंट है ना कॉन्स्टिट्यूशन का अंडरस्टैंडिंग करने, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम पे उसका इन्फ्लुएंस कैसे हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कुछ ना कुछ तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, a particular kind of relationship between legislature, executive, and then legislature, executive on one hand,
एंड जुडिशरी ऑन द अदर हैंड। तो उस सेपरेशन ऑफ पावर का हुआ क्या है बिकॉज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म और इवन द जुडिशियल ओवररीच, वो भी हमें इसमें देखना है। दूसरा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ब्रॉड डेफिनेटली होगा इंडियन डेमोक्रेसी। तो इंडियन डेमोक्रेसी का क्या हुआ उसकी वजह से, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, सो एंड सो फोर्थ। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग और बड़ा भी टॉपिक होने वाला है जुडिशरी का। there are two more points which are constantly in debate. So one is the method of appointing judges, collegium system, then the NJSC amendment, then court setting it aside, saying it encroaches upon the independence of judiciary, which as a principle is part and parcel of doctrine of basic structure. फिर कॉलेजियम सिस्टम रीइंस्टेट हुआ, वो डिसकंटिन्यू तो हुआ नहीं था, वो कंटिन्यू हुआ। एंड करंटली इन कंटेम्पररी टाइम्स we have been witness to, we are witness to a kind of cold war between the government on one hand and the judiciary on the other hand. वो कोल्ड वॉर पता चलेगा, आप पढ़िए, जब चीफ जस्टिस कहीं पे पब्लिक स्पीच देने जाते हैं तो क्या बोलते हैं वो, सो एंड सो फोर्थ। दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओके, और उसका लास्ट एलिमेंट है द एजेंडा ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स। वो GS2 में भी पूछा गया है, लेकिन इधर भी हमें करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म्स का है। सो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का वर्किंग, उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, एंड देन द वर्किंग ऑफ फेडरलिज्म, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसमें तो हमारा नेचर क्या है फेडरलिज्म का, वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें तो हम देखेंगे, लेकिन 50 से लेकर आज तक वर्किंग ऑफ फेडरलिज्म कैसे रहा है, इन व्हाट वे, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल what factors influence generally the working of federalism? What factors? कौन से वो फैक्टर्स होते हैं कि जिसका वर्किंग ऑफ फेडरलिज्म पे असर होता है, प्रभाव? तो एक पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होती है, पार्टी सिस्टम कैसी है। दूसरा है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, डेवलपमेंटल मॉडल क्या है आपका, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का भी फेडरलिज्म के वर्किंग के ऊपर असर होता है। अब देखिए कि जब नेहरू महालनोबिस मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल था तो प्लानिंग कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एंड प्लानिंग कमीशन डीपली इंपैक्टेड द वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। लेकिन 91 में हमने क्या किया, एलपीजी का स्वीकार किया, वी अडॉप्टेड एलपीजी एज अ पॉलिसी विच इज अगेंस्ट द नोशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लान, and rather it believes in LPG as a policy framework, believes in not centralized plan but decentralized plan. Okay, और फिर 2014 में तो वो भी चला जाता है, प्लानिंग कमीशन ही जाता है, वो नीति आयोग आता है। ओके, सो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? सो पहला मैंने कहा था पार्टी सिस्टम कैसी है, दूसरा है मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है उसमें, तीसरा जो फैक्टर है डेफिनेटली हाँ डेवलपमेंटल मॉडल, डेवलपमेंटल मॉडल, जैसे नेहरू मॉडल हम बोलते हैं, नेहरू महालनोबिस या मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, तो दैट वाज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो जब हम मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं तो प्राइमरीली क्या है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही है, ऑब्वियसली सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दैट। देन एलपीजी अगेन द मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो दूसरा ये फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है इवन जुडिशरी प्लेज इट्स रोल इन वर्किंग ऑफ फेडरलिज्म। शायद आपने पढ़ा होगा, बाद में भी आपको SR बोम्मई वर्डिक्ट, केस एंड वर्डिक्ट जो है, जिस केस में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्युलरिज्म को भी और फेडरलिज्म को डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना। ओके, सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और उसके बाद थोड़ा 356 का जो मिसयूज है तो डिक्लाइन है। ओके, so yes, judiciary can definitely play a role as far as the working of federalism is concerned. तीसरा है ये। और चौथा जो है, जिसको हम थोड़ा ब्रॉडली डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहेंगे उसको, यानी कि what is happening with the people of India. This is very general. So increasing participation of people becoming increasingly aware,
people becoming increasingly assertive. Okay, and in one sense or the other, the increasing public awareness and assertiveness, public assertiveness, has influenced the working of what? Federalism. अब जब हमने पार्टी सिस्टम को बोला, पार्टी सिस्टम में आपको पता है कि वी हैड एटलीस्ट फॉर 2 decades वन पार्टी रूल एंड कांग्रेस वाज द डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी. उसका डिक्लाइन शुरू हुआ, जनता गवर्नमेंट आता है इमरजेंसी के बाद, लेकिन वो ज्यादा नहीं होता है कि 2 बार कांग्रेस इलेक्शन जीती है. एंड देन 1989-90 तब से लेकर 2013 तक हमारा पार्लियामेंट हंग ही है, किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है और कोलिशन गवर्नमेंट का वो दौर कहा जाता है. ओके, अब उसमें पार्टी सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जो सामने आता है, उसकी शुरुआत पहले हुई थी, वो एक फिनोमेना है, दैट इज द रीजनल पार्टीज. द व्हाट इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द रीजनल पार्टीज. और कितना इंक्रीज, वो कन्वीनर थे चंद्रबाबू नायडू का इंपॉर्टेंस अगर जब मिड 90s में देखेंगे आप तो वो एक नेशनल लीडर थे despite having a regional party and few MPs with him, because no party in parliament, that is Lok Sabha, was in a position to enjoy or secure the essential, even the simple majority. That was the case. So the mandate was जिसकी वजह से लोकसभा हंग पार्लियामेंट था, सॉरी हंग लोकसभा था किसी को एक को. सो द मैंडेट वाज फ्रैगमेंटेड. ओके, मैंडेट वाज फ्रैगमेंटेड, पब्लिक मैंडेट वो फ्रैगमेंटेड था. ओके, सो रीजनल पार्टीज. तो आप देखिए जब हम रीजनल पार्टी एंड पीपल्स असर्टिवनेस उसका रिलेशनशिप देखते हैं तो समवेयर बिकॉज ऑफ द रीजनल आइडेंटिटीज, ओके, पीपल आर एटलीस्ट ड्यूरिंग those years, people were increasingly being supportive of the regional political parties. अभी भी वो कम नहीं हुआ है. Since last how many years, from 2014 till date, कितने साल हो गए? 9 years. BJP has been trying hard to do away with what? The national issues. Okay, but it has not succeeded. It has not succeeded. Okay, so therefore there is a integral relationship with the rising people's awareness being asserted, because regional parties are doing something with them. Whatever they are doing, we'll look into that later on. Whether they are doing just in a symbolic way or in some substantial way, okay, we'll check it out later on. So this is how we are also going to take note of the working of federalism and all those factors which have bearing on the working of federalism, whether it is that of the party system, whether it is the model of development, whether it is the judiciary, and whether it is the public assertiveness and awareness, increasing public awareness. ये सब factors हम federalism पे influencing factors देखेंगे. और last element है ये, अब ये खत्म हो जाएगा discussion. Okay, that is the Indian political process बोलते हैं उसको. What is that? Indian political process. आप ये कहां से शुरू होगा? 9th chapter है ये, 9th, 10th and 11th chapter. Role of caste, role of religion, role of ethnicity, party system, yes, Indian political process. So पहला था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाला 2 चैप्टर जिसमें है वो एलिमेंट. दूसरा एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन स्पेशल रेफरेंस विथ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन and the scheme of separation of power. तीसरा Indian constitutional process, the working of parliamentary system and the working of federalism. और चौथा लास्ट वाला है, ये हमने किया है कन्वीनियंस के लिए, Indian political process. Now what is political process? Political process is nothing but something which is part and parcel of state society relationship. It is part and parcel of state society relationship. Now देखिए, we adopted democracy. We adopted universal adult franchise. We began with the elections, and then slowly and steadily, caste emerged as one of the determining factors of
the voters' behavior. And subsequently, even party internalized that aspect and they started using caste in order to finalize the candidates, decide their strategies, so on and so forth. So that is how caste as a factor became central factor as far as the Indian political process is concerned. हमें पसंद हो या ना पसंद हो, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, आप इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस में ये चीजें थोड़ी बाजू रखनी है, ये कैसे हो रहा है. तो हमें तो एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉल साइंस वी हैव टू फर्स्ट try to make sense of that. Why do we have caste as part and parcel of Indian politics? And that is one of the central factors. शायद उसके बराबर किसी दूसरे फैक्टर का पोजीशन नहीं होगा, इतना वो सेंट्रली इंपॉर्टेंट बन चुका है. तो वो कास्ट यानी कि स्टेट सोसाइटी रिलेशनशिप वाला. दूसरा है रिलीजन. नाउ इवन दो वी स्टेटेड अ व्हाइल अगो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैपेंस टू बी अ सेक्युलर वन, expect all of us to follow the principle of secularism and have that separation between state on one hand, the government on one hand, the public domain on one hand, and religion on the other hand. So ये public private वाला separation यहाँ पे expected था. However, we haven't limited religion and religious affairs to the private realm. We have taken religion to the public realm. ये हुआ है as against the expectation of the principle secularism. तो इसीलिए religion, अब देखिए कि religion has been a factor, no doubt about that. And when religion becomes the factor, say for example, use of religion for political purpose. अब ये अगर उसको फॉर्म मिल जाता है तो उसको कम्युनलिज्म कहते हैं. यूज ऑफ रिलीजन फॉर पॉलिटिकल पर्पस, which is exactly opposite of secularism, which is exactly if you are religious, then you are not anti-secular at all, because secular does not mean anti-religious. If you are a religious person, if you follow your religion and limit it to your personal, individual, private sphere, then it would not be against the principle of secularism. But the moment you start using religion for political purposes, then that acquires the that acquires the form of communalism. So what is communalism? Communalism is, simply speaking, use of religion. I'm putting it in a very simple way. We'll later on look into the details. Communalism is nothing but use of religion for political purposes. Use of religion in order to mobilize people politically. Okay. And it ultimately takes the form of communal rights. That is, people killing people who belongs to other religion, looking at them as enemy of theirs. That is what happened in communal rights. And the ideology, therefore, Bipan Chandra, one of the very important modern Indian historian, interpreted communalism not as a random development in modern Indian history, but an ideology. As an ideology, we will discuss that. So, use of religion for political purpose is called as communalism, and that is something which exactly stands against the value system of secularism. Okay, तो वो भी हमें देखना है. Then ethnicity, whatever is happening right now in Manipur, there are number of fault lines, and we were supposed to be very, very sensitive about that, but unfortunately, neither the earlier state nor the present state seems to be sensitive. Okay, अब देखिए क्या होगा वो. Okay, ethnicity, and there are number. Ethnicity basically is a multifaceted, multi-dimensional phenomena. उसमें language है, उसमें religion है, उसमें culture है, उसमें yes customs है, उसमें region है, इतनी सारी चीजें है उसमें. Ideology है, we can't forget that. Ideology है उसमें. So it is a multi-layered, multi-dimensional phenomena. We'll look into that. History है उसमें, क्योंकि हिस्ट्री को छोड़ के हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, आइडियोलॉजी, सब चीजें है उसमें. तो इतना वो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना. सो
we have to be very, very careful and sensitive about that. But that has not been the case as far as the Indian state is concerned. Okay. Party system, yes. Without party, we cannot just make sense of Indian political process. If our constitution adopted democracy, okay, then party system and political parties happen to be the key to what? Realizing the goal of the democracy, at least as a form of government. So, what kind of party system do we have? उसका origin कैसे हुआ, ये बाकी सब चीजें, उसका functioning क्या है, what are the problems faced by party system, so on and so forth. National parties, regional parties. लेकिन ये थोड़ा हम टेक्निकल इलेक्शन कमीशन जैसे बताता है कि ये नेशनल है, ये रीजनल है, वैसे नहीं पढ़ने वाले हम. एज अ पॉलिटिकल प्रोसेस उसको हमें पढ़ना है. ओके, ब्रॉड फिनोमेना. एंड देन कम्स द लास्ट टॉपिक, दैट इज द सोशल मूवमेंट. अब देखिए, just it will take 1 minute. We have state and government as public agencies. Okay, state and government as public agencies. Number one. Number two, we have political parties. Okay, and it is through political parties that people get connected to government and state via political parties. Now, the most important political party undoubtedly happens to be the ruling party, because that is the party from the existing parties which is sent by the people in order to govern them. Mandate है ना उसको, तो वो क्या करेगा, वो ruling party क्या करेगा, बहुत ही important है. Number one. Number two, along with the ruling party, the opposition also is equally important, because if the ruling party is failing, then you can fall back, as the people can fall back on the opposition party. So therefore, opposition has to be very, very vibrant. Okay, because that determines the health of the democracy anywhere in the world. Okay, number two. Number three. Now, if your state and government fails, and if you are also, that is the people and society are also not happy with all existing parties, whether the ruling, whether the opposition, whether the national parties, whether the regional parties, then what happens? People try to find out a way out. And one way out happens to be the social movement. Okay, one way out happens to be the social movement. Now, social movements are sustained collective acts, wherein people, or that particular, not people as a larger collectivity, but people concerning an issue, maybe a locality, maybe an issue, a section of our society, where it feels that the issue is not addressed by parties on one hand and the government on the other hand. Then they come forward themselves, okay, organize themselves and undertake sustained collective act. And that sustained collective act is known as social movement. And there are civil liberties and human rights movements, women's movement, and environmentalist movement. Now, as far as the present era, as far as the present is concerned, so many scholars have stated that we have been going through, not since 7-8 years, but उन्होंने ऐसा बोला है कि 91 के बाद ही ये शुरू हुआ. We have been going through something called as decline of social movement. कब social movement recent past में हुई है ना? आप देखिए, फार्मर्स का हुआ था, 1 साल से ज्यादा हुआ था. Yes, that is बहुत सालों के बाद we witness that. बाकी स्पोरेडिक मूवमेंट होते हैं, 1-2 दिन, 1-2 हफ्ते के लिए होते, उससे ज्यादा नहीं होते. ओके, नर्मदा बचाओ आंदोलन, यस, साइलेंट वैली, ऐसे नर्मदा का तो इंपॉर्टेंट है, वो तो हमें देखना पड़ेगा. तो 70s, 80s, 1970s and 80s, these are the very important decades as far as the Indian political process in terms of social movement is concerned. So बहुत सारी गोल्डन ईरा कहा जाता है उसको, वो हम बाद में डेफिनेटली देखेंगे. तो सोशल मूवमेंट कहाँ पे आती है? तो गवर्नमेंट का फेलियर या डिससेटिस्फैक्शन और पॉलिटिकल पार्टी का फेलियर, और जब लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं कर रहे, एंड ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्टर्स इन अ डेमोक्रेसी, तो देन दैट पब्लिक एंगर, डिससेटिस्फैक्शन अक्वायर द फॉर्म ऑफ सोशल मूवमेंट. एंटी करप्शन वाला भी था. अब बहुत सारे स्कॉलर्स बोलते कि वो मूवमेंट नहीं था, वो एजिटेशन था. तो वो भी बाद में देखेंगे क्या एजिटेशन होता है, क्या मूवमेंट होता है.
So this is how we are going to look into all these 11 topics as part of IG. Okay, so that's it. Now in next lecture I'm going to मेरे ख्याल से वो पीपीटी डाला, एक बार चेक कीजिए आप, पोर्टल पे डाला है वो, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस. आप एनसीईआरटी 2 बार पढ़ के आइए एंड प्लीज स्टार्ट रीडिंग गौबा. Please skip the first chapter from Gauba, that is the political theory, and then start reading Gauba from chapter 2. Okay, NCERT, political theory, and then OP Gauba. Maybe not be tomorrow, maybe next week. Now, each one of you, that is all of you, now one of the concerns pertaining the current events. और मैंने पहले भी बोला था ना आपको. So this is the first set titled as Indian Polity Governance, which covers (31) topics from September 22 to May 23, which we have already circulated for those students who are writing mains this year. तो ये नोट आपको मिलने वाला है. तो do not be worried about current contemporary developments pertaining Indian Constitution. उसको पॉलिटी हमने किया है. उसका दूसरा सेट भी मिलने वाला है, जहां पे जून जुलाई 23 का जो है ना, अभी 2 महीने, तो वो हम उनको देने वाले हैं. वो भी आपको मिलेगा, आईआर का भी मिलेगा. तो करंट का इसमें ये ऐसा आपको कहीं पे मिलेगा नहीं. आप यू कैन चेक इट आउट, यू कैन कंपेयर दिस मटेरियल विथ एनी अदर मटेरियल. पुणे का छोड़िए, दिल्ली का कंपेयर कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि लेकिन पढ़ते नहीं लोग. इसीलिए हमने तय किया कि शुरू से दे देते हैं, तो आपको ये मिलने वाला है नेक्स्ट वीक. सो डोंट वरी अबाउट दैट करंट कंटेम्पररी एस्पेक्ट. यस, थैंक यू.